ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Jai Shri Krishna to all from Gita Parivar. Today we will recite the 15th chapter of the Bhagavad Gita and also present before you a true incident from the life of a Gita sadhak of Jagannath Puri. Why do we recite the Gita? हम गीता का पारायण क्यों करते हैं? स्वयं श्री भगवान की वाणी होने के कारण गीता का एक एक शब्द मंत्रमय है। समस्त वेदों का सार है गीता। गीता को बार बार पढ़ने से हमारी वाणी पवित्र होती है। पाठ करते करते गीता हमारे अंतरंग में उतर आती है। हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान का ही तो स्वरूप है गीता। आइए पारायण करें। श्रीमद् गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि संदतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा
मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमोक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। A true story from the great dham of Jagannath Puri in Odisha. There was a noble Brahmin, a great devotee of Lord Jagannath. Every day, without fail, he would worship Lord Krishna and read the Bhagavad Gita. The family lived on whatever was offered by villagers at the feet of the family deity. The family lived happily. But one day, there was nothing in the house to feed the family. Panditji had great faith in the Bhagavad Gita and in his favorite shloka, Yoga Kshemam Vahamyam. Your welfare is my concern. One day passed. No food. Second day passed. No food. Third day passed. No food. My mind dwells only on Jagannathji. I do not let it waver anywhere else. For 3 days, the family is starving. How does God claim Yoga Kshemam Vahamyaham,
It's wrong. And the Panditji strikes off his shlok from the Bhagavad Gita with a red pen. Hey Bhagwan, for how long will you test me? Ma, I'm Gopal. Yes, beta. Ma, Panditji has sent some grocery. Hurry, beta. Where did you meet Panditji? In the temple. From there only Panditji has sent me with this grocery. Beta, Panditji sent all this? Yes, Ma. Beta, what has happened to your head? Why have you tied this bandage? Ma, Panditji struck me so badly this morning. Ooh, what? What are you saying? I am speaking the truth, Ma. You may ask Panditji when he comes back. Ma, I am leaving now. Do not worry. All shall be well. So much of grocery. Panditji must have met a great benefactor. God also provides through someone. Where did all this come from? You only sent it? I sent? But I had gone to the temple. Yes, Gopal said that Panditji has sent this from the temple. Who, Gopal? You don't know Gopal? He came with a bullock cart full of groceries. The same boy whom you struck badly this morning. I struck someone this morning? Yes, he had an injury on his head. When I asked him about it, he said that Panditji struck him and gave him the injury. Hey Bhagwan! Bhagavad Gita is Krishna Bhagwan himself. I lost faith, struck off a line, and Bhagavan got hurt. Oh Bhagwan, forgive me, forgive me, forgive me. Ananyaschintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. As Bhagwan stated, he provides for the welfare of the world and for his devotees in the form of Gopal, who can be a farmer, a teacher, a doctor, a soldier, a friend, a housewife, everyone to elevate our soul. With deep faith, it is for us to recognize Gopal in each one of them. Let's
योग द्वारा किस प्रकार से हम आत्माएं परमात्मा से जुड़ जाते हैं, इसी को योग कहा जाता है, इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो प्रिय भाइयों